Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we have to solve some more important physics MCQs. So MCQs number 1, which is given that if the area of the circle is equal to circumference of the circle, then radius of the circle will be. क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सर्कल है, उसकी एरिया उसके सरकमफेरेंस के बराबर है, तो बताइए कि उसका रेडियस क्या होगा. So the correct option is 2 units. So we know that area of a circle is pi r square and circumference of a circle is equal to 2 pi r. So the question stated that both area and circumference are equal. By putting the formula of area, which is equal to 2 pi r, which is the circumference of a circle, so pi के साथ कैंसिल किया जाएगा और similarly the radius should be cancelled with the one of them. So the radius of the circle will be 2 unit. MCQs number 2, which is given that a vector A, which is equal to cos theta in x direction plus sin theta in the direction of y axis, unit vector or just vector, or this is the vector along the x axis or this is the vector along the y axis. So which one option is correct? So this is the unit vector. So we know that by finding the magnitude of a vector, we have to apply the formula. So magnitude of a vector, which is equal to cos square theta plus sin square theta. So cos square theta plus sin square theta, which is equal to 1. So it means that this vector is unit vector. MCQs number 3, which stated that if A vector and B vector are two non-zero vectors, and if A vector, which is equal to under the root 2 time B vector, then क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दो वेक्टर है A और B, दोनों नॉन जीरो वेक्टर है और इन दोनों के बीच रिलेशन ये है. तो अब इन रिलेशन के थ्रू ये बताइए कि ये दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है. करेक्ट ऑप्शन इज A, which is vector in parallel. So we know that A vector, which is equal to k time into B vector. So this k is a scalar product. So if we multiply a vector with a positive number, it means that those two vectors will be in parallel direction. If this scalar product is negative, then it means that both will be anti-parallel. So here the under the root 2 is greater than 1. It means that both A and B are in parallel direction. MCQs number 4, which stated that the minimum number of unequal forces whose vector sum can be 0, यानी कितने मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेस होना चाहिए एक वेक्टर के लिए ताकि हम उनको जमा करें और उसका रिजल्ट हमें 0 दे दे. तो मिनिमम नंबर हमें 3 चाहिए. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. MCQs number 5 stated that angular momentum is a scalar vector, an axial vector, a polar vector, a displacement vector. So the correct option is an axial vector. MCQs number 6 was stated that the direction of a vector in space is specified by, यानी एक वेक्टर की डायरेक्शन स्पेस में कितने एंगल से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं. by 3 angles x, y and z. MCQs number 7, which is given that maximum number of component of a vector may be,
यानी हमारे पास एक वेक्टर की मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हो सकते हैं, तो ये इनफिनिट हो सकते हैं। MCQ number 8 which stated that the direction of vector product is given by, यानी एक वेक्टर प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन हमें मिलती है वो कौन से रूल के तहत हम उस डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज हेड टू टेल रूल, बी राइट हैंड रूल, नंबर सी लेफ्ट हैंड रूल, डी नन। So by right hand rule we are able to find the direction of vector. MCQ number 9 which stated that null vector is a vector which has, null vector वो वेक्टर है जिसका क्या हो, मतलब जीरो मैग्नीट्यूड हो, नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन हो, सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, यानी इसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शन बी ना हो, और ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी आर नॉट करेक्ट। सो नल वेक्टर याद रखे उसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और डायरेक्शन आर्बिट्ररी होता है, यानी नो स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर नल वेक्टर। थैंक यू।